One law is to be saved. Another law is because they are saved. Because we are saved, we will keep the the moral law. That's Ten Commandments. The first commandment is the you should serve only one God, the Jehovah. This law is not to be saved, but this law should be kept because they are saved. One of the two laws should be abolished in the cross. That is ceremonial law, because by this law, they can be people of God. But as for as for moral law, as for moral law, this moral law is not abolished in the cross. And this moral law cannot be kept before they become the people of God. This moral law should not be kept to be saved. And some says that because you are saved, we became free from the whole law. We are saved, we are free from whole law. But that is not true. Only half is true. Okay, the ceremonial law will be abolished in the cross because the antitype will come and he will die in the cross. The ceremonial law will be stopped in the cross, but moral law will begin after they are being saved.
If you are saved by faith, the God's moral law will be scripted in your heart. Will be written on your heart. Then you can have the willing heart to keep the God's law. Not abolishing by faith, but strengthening by faith. So you are the people of God. You are the Christian who is born again by Jesus. Then you should keep the God's moral law. You should keep the moral law, the first commandment, and not only first commandment, second commandment, and third commandment, but also first commandment, that is the Sabbath commandment. Which day is the Sabbath day in God's commandment, in God's moral law? That is seventh day. You can read Exodus chapter 20, from verse 8 to verse 11. According to these verses, the seventh day is the Sabbath day. Sabbath day is the memorial day of uh, your saving. The seventh the seventh day is the rest day. Rest means the saved from our sin. The number seven has special secret meaning. Seven include the number six and one. Number six stands for man, and number one stands for God.
So this number 7 means unification of God and man. We are saved by faith. That means we are united into God. Therefore, we should not forget, we should not abolish this first commandment, the Sabbath commandment, because because there we can find the secret of our salvation. Because we are saved, we keep first commandment. Because we are saved, we keep Sabbath day. Because we are saved, we keep the seventh day. This is the biblical truth. You should not forget this. Sabbath keeping is the memorial for your salvation from your sin. You can read Exodus chapter 20, verse 11. This is the conclusion of, of today's teaching. Okay, please, you pray.
Recording stopped. Okay, thank you, everyone. Thank you. Recording in progress. What question do you have? धन्यवाद सर अच्छे मैसेज के लिए धन्यवाद सभी भाई बहनों को धन्यवाद थैंक यू जय मसीह की सर जी जय मसीह की जय मसीह सर जय मसीह जय मसीह जय मसीह की हेलो जी थैंक यू सर फॉर ग्रेट टुडे सर आज के संदेश में हम बहुत धन्यवादी थे सर कि आपकी ओर से और अबू जी के द्वारा हमें कैसे संदेश सुनने को मिला सर और आई एम सो वेरी ग्रेटफुल थैंक्स फॉर यू सर फॉर गिव मी योर ग्रेट गाइडेंस and we are get together in this evening. And question is nothing sir but something is very clarification. जो चीजें सर सेक्रीफाइस के लिए बलिदान के लिए चढ़ाई जाती थी और सर उसमें चीज ये तो सबसे अच्छी जो आज बाबू जी ने हमें क्लियर कर दी कि जो चीज चढ़ गई जो चीज चढ़ने वाली थी वो अलग थी और जो नहीं चढ़नी थी वो अलग थी तो इसमें सर हम इसमें से जो चढ़ने वाली चीज थी सर उसको हम नहीं खा सकते मतलब जो नहीं चढ़ी चीज थी उसको हम बाई फेथ खा सकते एंड दैट बट सर यहूदियों के सर टाइम थे हम ये देखते हैं कि जो सर वेदी के खाने वाले थे वो Thank you so much, sir. You can listen to me, sir, carefully, sir. I hope, sir. Oh, thank you, sir. It is sir, your great message today, and thank you for Abuji your clarification, and it is everything is clear. Sacrifice and बलिदान जो है सर जो बलिदान चढ़ाने वाले हैं वो बलिदानों के खाने वाले हैं बट सर बाइबल में जो इस तरह से हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके हम 21 और 22 पद को देखते हैं कि जो चढ़ जाता है उसमें मूर्तियों पे वो अशुद्ध हो जाता है और सर वो चीजें खाने योग्य नहीं होती हैं तो ये कितने हद तक सर इसको हम सत्य माने सर क्योंकि बहुत सी बात चीजें सर लोग जो बिलीवर हैं सर जो पास्ट जो अदर डिनोमिनेशन के हैं वो भी इस चीज को सर फॉलो अप करते हैं सर वो मूर्तियों पे चढ़ा के खा लेते हैं बट सम टाइम दे गिव द रॉन्ग टीचिंग सर तो सम टाइम आई नीड योर क्लियरिफिकेशन सर कि उस चीज को हम कैसे सर उनको सिखाएं जो फर्स्ट कोरिन्थियन एंड
and 10 chapter and verse 21-22. Please clarification, sir. Thank you. What connecting? Mm. 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 First Corinthians chapter 2. First Corinthians chapter 10. First Corinthians chapter 10. Uh, 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 just chapter 10, First Corinthians. Okay, First Corinthians. Yeah. Yeah, sir. I read it, sir. I read it. I read it 1:4. हे मेरे प्रियो भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं तुम्हें विद्यमान जानकर ये तुमसे कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। धन्यवाद का कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिस पे हम भोज में तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? एक ही रोटी है, इसलिए हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी के सब सहभागी होते हैं। जो शरीर की दृष्टि से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलि के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या कि मूर्ति पर चढ़ाया गई बलि कुछ है या मूर्ति कुछ है? वरन नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु की मेरोट कटोरे और दुष्ट आत्मा कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दोनों दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से साझी नहीं हो सकते। या प्लीज सर क्लियरिफिकेशन। What verse? Yeah, verse 1 Corinthians chapter 10 and verse 21, 20, 21 and 22. 22, 21, 21 22. and 22. Yeah. 21, 22. No, 20. Let me see. Just mm, mm, okay, this Corinthians chapter 10, verse 20 to 22.
the sacrificial of the just a minute. The foreigners sacrifice means to worship to evil spirit, right? Not God. And so you should not eat the meat of the sacrifice of foreigners, right? Okay. This is the problem of Corinthian churches. In Corinthian market, the meat was sold. Among the meat sold in the Corinthian market, sometimes there was a meat from the sacrifice of their foreign idols. The problem is that right for Christians or not? The problem is that right? In biblical view, we should not have or eat the meat put to the sacrifice for idol or evil spirit. But if you have the strong faith, you may eat even the meat sacrificed to the idols or evil spirit because they are nothing. This is the level of faith. The problem of the okay, this is the problem of the strength of your faith. If you don't have strong faith, you may not have the meat, the sacrifice to idol or evil spirit. But if you have strong faith, you may have because they are nothing. Okay. Knowing the real nature of idol worship, that is communing with Satan and his evil angels. So Paul urgently admonishes the Corinthians to avoid idolatry. Christians are solemnly dedicated to Christ. They belong to him by creation and redemption, and they cannot give the least degree of sanction to a form of worship that would give honor to any being other than the one true God. Likewise, it is wrong for Christians to allow their time or affections to be given to anything or any person in preference to God and his service. He must come first at all times
and he serves must have first consideration always. Okay. इंक्लूडिंग माय क्वेश्चन, 1 सेकंड सर। अभी भी सर हम बहुत सी चीजों को देखते हैं जो सर कसाई खाने में जो मीट काटते हैं, कुछ रिलीजियस लोग सर वो अभी भी कुछ कुछ पढ़ के काटते हैं, तो क्या उसका असर सर अभी भी होता है सर? हम्म 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 हम्म। तो क्या क्या सर, क्या इन चीजों का असर सर खाने वाले पे होता है सर? कि अगर वो डाउट मन में आ गया तो क्या वो उस चीज से अफेक्टेड होगा कि फिर नहीं होगा? ये मुझे जानना, थोड़ा क्लियर कर दिए प्लीज सर इसको आप। Yes. Mm. Okay. Verse 25. Chapter 10, verse 25. You can read it. यस, आई। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हम्म हम्म। ये थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे ये जानना था सर, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि अभी भी बहुत से विश्वासियों के बीच, जहाँ वो मसीह विश्वासी रहते हैं, कुछ मुस्लिम भी सर वहाँ रहते हैं उनके बीच में। और जब बकरा ईद आती है सर, तो वो कुर्बानी करते हैं घर में बुला के, पढ़वा के, और वो मीट सर वो लोगों को स्प्रेड करते, लोगों को बांटते हैं सर। बट जब वो इस मीट को खाते हैं जो दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्लिम्स के द्वारा, वो कुछ ना कुछ सर महसूस करते हैं, या कुछ थोड़ा सा माइंड प्रॉब्लम करता है, या कुछ चीजें लगता है कुछ बहुत भारी हो गया है, या मन बहुत बोझिल हो जाता है, लगता है कुछ गलत हो गया है। वो लोग मुझसे बताते हैं आकर कि ऐसा क्यों होता है भैया, कि जब वो मीट हमें देते हैं पड़ोसियों के नाते जो, और वो हम खा लेते हैं बकरा ईद में के समय में लेकर फ्री में, बट उसको खाने में वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है सर। तो मैं इस बात को मान लेता हूँ सर कि उनका विवेक कमजोर है, या वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो बकरी ईद में कुर्बानी की, वो कुर्बानी का मतलब सर कि हमारे पापों के लिए कोई दूसरा बलि हो रहा है, हमारे गुनाहों को कोई दूसरा लेके जा रहा है, हमारे गुनाह इसमें आ रहे हैं बकरे में, और हमारे सारे गुनाह इसमें आ जाएं, उससे कुर्बान करते हैं मंत्रों के द्वारा, कुछ भी बोलकर, और वो उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये चीजें सर अभी भी देखने को मिलती हैं सर। बट वो जब इससे अफेक्टेड हो जाते हैं तो वो चर्च में आते हैं फॉर प्रेयर, फॉर हीलिंग, फॉर रिलैक्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। दे सेइंग मी, वी ईट ए डिस्ट्रीब्यूटिव मीट। तो आई दिस क्लियर टुडे कि थैंक यू सो मच अबू सर एंड यू क्लियर इफेक्टेड करता है वो चीज सर, वो इफेक्टेड होता है।
क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी वो इविल स्पिरिट के रूप में काम करता है। ये मुझे आज क्लियर कर दिया आपने सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अबू जी, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you. Thank you. हम्म, हम्म, Okay. 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 Another question. What is another question? Okay. 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 Thank you, everyone. Thank you. See you next week. Bye bye. Bye bye, everyone. Okay, bye bye. Thank you so बाय much. बाय, बहुत बहुत धन्यवाद Bye bye. अच्छा मैसेज के लिए। थैंक यू। Thank you. Recording stopped. जय मसीह की ब्रजेश सर, जय मसीह की धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। बस का नाम है? हमरा भेज दे व्हाट्सएप ना।